थिंक मास्टर्स यूनियन के बारे में कुछ बहुत ही अलग अलग न्यूज हमको सुनने को मिलता है. Since you are part of it, we want to understand from you what is your view. Do you think it's a good college? And before we get into that, that angle of good or bad, which is rather I would say subjective. Objectively, how do you look at it? What is the college like? What is the environment like? Do you think it's a good space to be? For me, sir, like, okay, let me like get down to the most personal part of it, because when Yeah. I was considering colleges, I had a host of colleges. Sir knows that I had a host of college offers in my hand. Correct. I mean, सबका अपना decision matrix अलग होता है, like what they want to extract out of an MBA. Not everybody wants a job. If somebody is wanting to say, or is already in a pretty good position, but wants to take it to the next level. Somebody is a fresher and wanting some corporate experience. Somebody's coming from a family business wanting to innovate something in their business, trying to include something new. Today's business world is a little different from how it was 20, 30 years back. इनोवेशन बहुत रिक्वायर्ड है, टेक टेक नॉलेज बहुत रिक्वायर्ड है. हर चीज टेक ओरिएंटेड होता जा रहा है धीरे धीरे, फॉर दैट मैटर. So हाँ, मतलब it's like choosing a college is something that you just don't go by something that is written on the news, right? News or say Google पे क्या लिखा रहता है. It's beyond statistics. It has something to do with what you want to extract out of it. So like just giving an example, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम IIM ही जाओगे तो लाइफ बहुत क्रेजी होगा, बिकॉज देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ किड्स. वहाँ पे भी स्टेटिस्टिक्स डिफरेंट होता है. And then it's the same at any other college too. I mean, मैंने को एक I know somebody from Gym Goa. I'm sure sir आपको ही पता होगा Gym Goa के बारे में. It's definitely okay. Has it stopped streaming? No, no. Okay. Yes, please, Yeah. please go on. Please go on. So as you know, there's a friend of mine from Gym Goa. It's not exactly an IIM per se, but वहाँ पे मेरा एक friend है. He's done tremendously well for himself. Got the highest placement there. I mean, that's just one metric, but what I'm saying is that, it's up to you what you want to extract out of college and not what you read. Eh, I came with a very definite, set of points that what I wanted to extract out of my MBA. I had very solid points about that when I'm here in Masters Union, मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. I am not somebody who wants to be I'm not a compliant person per se, that जो कहते जाओगे वो करते जाना है. I really want some flexibility in life. I want to choose what I want to do, and I also want to be able to drop what I don't want to do and not be penalized because of that. हर जगह कायदे कानून अलग होते हैं, but it's up to you, like how you want to navigate through that. Absolutely. So I think that really sounds, very, very good. So Yash, if I look at, the traditional, these schools in the country, if I talk about the IIMs or the, the XLRIs, the FMS of the world, how do you see, Masters Union with respect to that? What is, in terms of personification, do you see any change? Do you see Masters Union to be more vibrant or dynamic, or how do you see it The being the different from the thing है, traditional? I mean, okay, the thing is that, look, I'm no expert on the whole MBA front and life. I'm also still navigating my life, still pretty young. But Sure. एक चीज मैंने ये देखी है कि कोई भी इंसान जब कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, एटलीस्ट बाय एंड लार्ज 3 लाख में से मेजोरिटी लोग कैट compete इसीलिए करते हैं क्योंकि दे नो कि एक बार अंदर घुस गए तो उनके दिमाग में एक फ्रेम बना हुआ है कि हाँ, एक रीजनेबल प्लेसमेंट लग जाएगा. एज जॉब सीकर मोस्टली वो, हाउ यू एलिवेट फ्रॉम देयर इज टोटली अप टू यू, बट उनका स्टेपिंग स्टोन ऐसे ही होता है, राइट? If Correct. I'm not wrong. Correct. So Masters Union में थोड़ा सा ये है that we have people who are towards the higher age side, थोड़ा सा experience already लेकर आते हैं. थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत डाइवर्सिफाइड है, लोग अपने बिजनेसेस अपने स्टार्टअप्स करके आते हैं. आई नो अ फ्यू पीपल इन माय बैच जिनके काफी रीजनेबल स्केल के स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी. काफी बड़े बिजनेसेस वाले भी हैं जिनका फैमिली बिजनेस है और वो कुछ नया वर्टिकल बनाना चाहते हैं, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं. So that's something that Masters Union does give you that platform. They'll give you the platform to network. They'll get you people who you can talk and, like, industry leaders जिनसे तुम डायरेक्टली यू कैन हैव मेंटरशिप. यू कैन बेसिकली ग्रो योर कनेक्शंस टू दैट लेवल कि आप अपने कॉलेज एग्जाम्स के बाहर भी उनसे बात कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो. कॉलेज आपको उतना फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा कि आप जाओ अपना बिजनेस ग्रो करो, उनसे मिलो, so that you don't also get penalized for what is happening inside the college all the time. तो ये Got एक डिफरेंट एज है, एक
you can say a different factor that comes into play at Masters Union versus a B school is versus a conventional B school is that कुछ नया करने को तुमको मिलता है and it's totally up to you कि तुमको करना है कि नहीं करना है. You get to choose. That is a lot of freedom in itself. I don't know how a 22-year-old would think in terms of freedom, but I certainly would. मुझे वो freedom चाहिए कि अगर मैं यहाँ जाकर किसी से मिलना चाहता हूँ, या मैं अपना एक मेरा खुद का स्टार्टअप है, उसको ग्रो करना चाहता हूँ, कुछ नया लाना चाहता हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ, for that matter. I was a very rookie at digital marketing and everything. अभी भी मुझे कुछ इतना खास नहीं आता है, बट थोड़ा बहुत जानने को मिला है. That is got it, something that I learned from somebody जिसने अपना स्टार्टअप थोड़ा सा स्केल किया है. मुझे एक स्टेपिंग स्टोन वहां समझ में आया कि ओ हाउ डू यू क्रैक एट सीईओ थोड़ा सा, for got that it, matter. We also have subjects that is from the academic point of view. ये सब subjects भी हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है. तो इंडस्ट्री लीडर्स जो कि अच्छे फर्म्स बना चुके हैं, अच्छे रोल्स पे काम कर चुके हैं, वो सब आके रियली सामने सामने बैठा के पढ़ाते हैं. तो इट्स नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, इट्स ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग. असाइनमेंट भी वैसे ही होते हैं, वायर फ्रेम बना के दो फॉर एग्जाम्पल. मुझे कॉलेज के आने के पहले पता नहीं था वायर फ्रेम क्या होता है. तो getting inside the college, it's also like एक दूसरा लाइफ साइड बाय साइड चल रहा है where you are focusing on your own ambitions, and inside the college वो दोनों connect है, academically भी connect है, and otherwise than that outside the college भी वो एक connect establish हो जाता है. got it. तो वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है. ऐसे तो प्लेसमेंट्स भी होती हैं, लाइक सिंस वी आर इन अ कैंपस जहाँ पे इतनी सारी कंपनीज हैं ऑलरेडी, यू समटाइम्स जस्ट like bang into somebody who's a potential recruiter, right? We have so many CXOs coming in. Abhi NASSCOM's Devjani Ghosh was on campus, right? हमारे यहाँ पे ऐसे भी cases हुए हैं that we have had CXO sessions and somebody's asked a very brilliant question and उसको on the spot job offer कर दिया है. ऐसा भी Wow, हुआ है. wow. A general MBA aspirant would also want to look at how the placements are. So, if you could tell me a little bit about how the placements are at Masters Union, and then I'll also touch upon some of the other elements like cost, etc., etc. So that also we will discuss. But what's your view on the placements first? Okay, so I think मास्टर्स यूनियन में एक प्लेसमेंट में भी थोड़ा सा इनोवेशन ये है कि इट्स नॉट जस्ट द कन्वेंशनल कंपनीज कमिंग इन. यस, द नंबर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ IIM टेक. आई मीन से एक्सेंचर जाता है तो उधर 50-60 बच्चों को उठा लेता है. दैट्स नॉट द केस हियर, बट आवर कोहॉर्ट साइज इज रिलेटिवली आल्सो वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कॉलेजेस. सो नेचुरली व्हेन दे कम टू आवर कैंपस, वो ऑलरेडी फिल्टर हो के एक सर्टेन लेवल ऑफ बच्चे ही रह जाते हैं जिनको वो फुलफिल करना होता है. बट ऐसा नहीं है कि दोस कंपनीज आल्सो डोंट कम. लेकिन माय करंट बैच इटसेल्फ, एक्सेंचर से बच्चा प्लेस हुआ है, BCG से बच्चे प्लेस हुए हैं. दिस अ कंपनी कॉल्ड पर्नो रिकॉर्ड, इट्स अ लिकर कंपनी, इट्स अ वेरी बिग लिकर कंपनी, उसमें भी प्लेस हुए हैं. दिस अ कंपनी कॉल्ड सर्विस नाउ, राइट? इट्स अ US based public listed company for product. A couple of people have gotten placed there as well. So yeah, and if you go back to last year's cohort, we have had like commendable numbers in terms of VCs also coming in. Large tech has also come. Consulting also, I have met 3-4 people from the last cohort. BCG, Bain, McKinsey has also come to the campus. So these placements happen. Yes, not in those numbers when you see it from an IIM perspective, but उधर 400-500 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे is still 10% of it. हमारे यहाँ पे होंगे कि 160 बच्चे थे तो 8 बच्चे 10 बच्चे प्लेस हुए होंगे, for that matter. Got it. So the batch size is relatively smaller. The batch size is around 150, 160, if I understand correctly. This year it is 200, and I Okay, think they are going to stick with the same for the upcoming got it. batches. Got it. So the batch size is approximately 200. Okay. Yeah. So I think, Yash, if I talk, so primarily, One incentive I would like to give yeah, everybody here. yes, Sorry to interrupt. yeah. I'm sure you guys must be knowing Zerodha does not go to any other campus, right? Yeah, so Zerodha has zero. come for the two consecutive years. This year also they've come. Last year also they came, and they've Got it. taken students from last year. And this year's recruitment is going on with Zerodha right now. Absolutely, absolutely. So primarily the reports that we see on the placement on the website, Yash, should we rely upon that? Do you think it is appropriate? Do you think that it is a reliable source of information, and people should certainly trust it, because there are many rumors also which is around, and people not trusting these reports. How do you look at it?
So I look at it from a point that any report that any colleges publishes for that matter, उसमें 10% plus minus variation रहता ही है. But beyond that, by and large, facts are pretty much verified and true. Because now that, I mean, if I was a student on the outside, still aspiring right now, level of doubt ज़्यादा होता है. But when you meet those people, जैसे मान लो for example मैं place हो चुका हूँ इस बैच में, मेरा placement brochure में मेरी कंपनी का नाम है, मेरे लिंक्डइन पे मैं हूँ कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं जाकर सीधा बात कर सकता हूँ ना, नाम इनसाइड द कॉलेज. आई स्पोक टू सो मेनी सीनियर्स जो कि काम कर रहे हैं ऑलरेडी, दे गॉट प्लेस इन देयर वर्किंग, सो आई हैव डायरेक्ट knowledge and experience from the fact that I have looked into their eyes and talked to them. हाँ वो वहाँ गए हैं for that matter. Got it. तो Got it. जैसे मेरा फाइनेंस में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज थोड़ा बहुत ऐसे गेन हो गया ओवर द इयर्स, इंटरेस्ट भी वहीं पर है फ्रॉम अ डोमेन पर्सपेक्टिव. So I spoke to the ones who got placed at VCs or PE for that matter. So I've been able to verify it firsthand that yeah, they've got an offer, they've joined and they're working. And the salary point is also, I mean, nobody declares their salary in the absolute numbers, but एक range दे देते हैं और आपको समझ में आ जाता है. You have a half an hour long conversation, you know who's passing and how much of it is true. Got it. Got it. So would it be safe to say that the average would be, in that 25-30 odd range for Masters Union? Absolutely, sir. Absolutely. Like rather, it's on the higher side. But हाँ, मतलब जो placement report is a pretty reliable Reliable thing to source to read. understand the You median put and 10, average. you put 10% variation in your head for sure. वो होता ही है. But then other than that, it's by and large true. Got it. Got it. Um, coming to the cost of living. Primarily, the fee is I think around 26, but you can confirm that. So, Yeah. what So is the fee? Yeah. my batch intake, the fees was 26 lakhs, and that's just the tuition fees. After that, there's boarding and lodging fees, right? So that's another 3-4 lakh rupees for the 12 months that you are inside the campus. Yeah, the thing is that here in Gurgaon, we don't have campuses like IIM do. एक गुड़गांव में सिर्फ एक MDI का campus है. So we have a entire building that has been taken nearby. It's a co-living settlement, but it's mostly the entire cohort stays in that building. Some of us are divided. I stay in a different place, but that's on to my own choice. I did it on my own. I did not want to stay in the whole 100 people building. Absolutely. So, तो guys, पकड़ के चलो कि 34 lakhs का खर्चा हो जाता है. okay, all right. And there's So, a scholarship too. The college does award scholarship, right? okay, okay. And what are the criteria? Generally, the So criterias there for. are there are a lot of criterias. Like I myself got a scholarship, right? I got a 50% scholarship on my tuition fee. There are people who got 25% scholarship as well, and it's a reasonable number too. But that's I mean, there are multiple criteria for it. There are under different headers. It's like one is a diversity program that you come from a lot of excellent academics भी है, experience भी है, और भी कुछ co-curricular side में किया है वो है. फिर एक है कि you had an entrepreneurial success of some level. I mean, we are not expected to have billion-dollar revenues right now in our lives, right? I mean, इतने भी कोई geniuses नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत होते हैं, but वो कॉलेज नहीं आते हैं फिर. But for that matter, जैसे you have a startup which has done reasonably well, so you get an as a incoming student, you get an entrepreneurial scholarship. Got it. And that's basically it's basically a value add. It's a mutually beneficial value add, right? If you have somebody who's making a business on his own, he's your classmate, you get to know a lot about just than other than the whole job aspect of it. कि business खड़ा कैसे करते हैं, छोटी छोटी चीजें कैसी देखी जाती हैं, एंड द डर्टी वर्क, लाइक आप एक कन्वेंशनल कंपनी में काम करने जाते हो तो आपका लाइफ बहुत डिफाइंड होता है, आपका एक केपीआई बना हुआ होता है. ठीक है, उसमें ग्रोथ है हर साल 5% 10% का, बट यू आर एक्चुअली फॉलोइंग एन एसओपी इन अ वे. स्टार्टअप वगैरह में काम करने में एक की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कि लाइफ बड़ी फनी होती है एक तरीके से. आई मीन, यू आर द मैनेजर ऑफ एवरीथिंग. यू हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ऑल न्यू आइडियाज यू कैन गिव, you can also implement it how you want it. So वो एक different level of freedom, एक disruption cause करने का, कुछ नया ढूंढने का, वो failure है या success है वो तो बात की बात है. But you get to learn a lot more than just the technical and like a minute scope of things versus you do in a job. Got it.
So guys, I think I'm hoping that this is helpful to all the people who are listening to us. Would request you certainly like this and do share it so that other people also who have any confusions that can be clarified. Krishna, to just quickly answer a couple of questions that you've directed at Yash, I think, see, in terms of placement reports, Krishna, I can tell you this that even at the top B schools, you don't have everybody getting placed. So that is one reality which you have to understand. Okay, so there'll always be some people who will be in that gray zone. So that is something which you should know if you don't know that, don't know it already. So that is something which is there. Primarily, a couple of questions, Yash, which is coming through the chat also. Yes, In sir. terms of AICTE approval. So that is something which I believe is not there in case of Masters Union. You can correct me. Does that affect in any manner, whether it is No, sir. qualifying I for? think I think ISB also does not have it, right? Okay, एंड आई मीन सर, जिस कॉलेज के पास एआईसीटी अप्रूवल है, उसका क्या गारंटी है कि वो वही छक्के मारता है लाइफ में? ऐसे तो बहुत सारे कॉलेजेस इधर खुले हुए हैं, इधर पंजाब से लेके हिमाचल तक। प्लेस वेयर आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम, उसको भी एआईसीटी अप्रूवल, तो क्या सब लोग वहां पे लाखों रुपए थोड़ी बना रहे हैं फॉर दैट मैटर? correct, आई मीन देखो क्या होता है ना कि ये सब जब तक आप एजुकेशन एटमॉस्फेयर में रहते हो तो ये सब ऑप्टिक्स आपको नजर आते हैं, समझ में आते हैं। वंस यू एक्चुअली अक्वायर अ स्किल दैट यू आर प्रीटी गुड एट, राइट, एंड यू आर एबल टू पिवट फ्रॉम देयर, नो, आई मीन मेरे घर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमबीए नहीं किया है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं किया है, बट एक स्किल अक्वायर किया है, दे आर डूइंग वेल फॉर देमसेल्फ। तो अब कोई जरूरी नहीं है कि एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से किया है तो ओ आई एम एंटाइटल्ड टू समथिंग। वो वाला दुनिया अब खत्म हो चुका है। इट्स अबाउट योर स्किल, इट्स अबाउट हु यू आर एंड व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल दैट एक्चुअली मैटर्स नाउ। got it. वही आज की रियलिटी है। Got it. Yes, what is the selection criteria? What's the process like? So, for example, I think there is a form coming up, and the deadline is also coming up, and therefore, I thought that we should do this very, very quickly so that it can be helpful to a lot of people. What's the process like? How did you get through the तो master's unit? इनका फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होता है इन अ वे दैट इट्स जस्ट नॉट योर डिटेल्स दैट यू हैव टू सबमिट, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वो सब तो आप करते ही हो, बट देन दे हैव अदर पॉइंटर्स दैट दे वांट टू नो अबाउट यू। then you even are supposed to upload. I think the CV part is optional, but I did it, so I take it like it's a value add कि मैं एक CV बना के दे रहा हूँ, which is apart from the form, अटैच करके दे रहा हूँ, तो अगला एडमिशन कमेटी में बंदा बैठ के पढ़ रहा है उसको, राइट। उसके बाद एग्जाम होता है। इस साल से एमयू बैच कंपलसरी हो गया है, पिछले साल तक कंपलसरी नहीं था, बट इट वाज लाइक यू आर सपोज टू हैव अ सर्टेन स्कोर इन अ सर्टेन एग्जाम, right? And MUBAT is like MUBAT जो इनका particular exam है, it's beyond just like DILR, quants and English. There is a gamified experience also, तीन चार games होते हैं, and that's based on like serious logical reasoning, that's all। थोड़ा बहुत तुक्का है, थोड़ा बहुत ऐसा है कि तुमको समझ में आ जाता है, but the time is already run out। और डिफिकल्ट भी होता है, ऐसा नहीं। आई ऑल्सो फाउंड वन गेम रियली डिफिकल्ट टू क्रैक, वो नहीं हो रहा था। Got it. So what's the selection criteria like? For example, what does Master Union look for in a candidate? What is it that they are looking for? What is your cohort like, Yash? ओके, सो एक्चुअली एवरेज वर्क एक्सपीरियंस हमारे कोहॉर्ट का, जब आप 200 बच्चे कंसिडर कर रहे हो, तो कम डाउन टू अराउंड 3.5 years ऑफ एवरेज वर्क एक्सपीरियंस। फ्रेशर का काउंट बहुत कम है, 10% ही होगा, आई थिंक 10 से 8% होगा हमारे बैच में। So that's one thing that is there. Criteria, so there's no hardline criteria per se, but they look at an all-round development of where the kid has come through. And it's just not academics only. अब को करिकुलर कुछ अलग से किया है, कुछ अलग एनजीओ वर्क किया है, कुछ और काम किया है, तो दे सी दैट कि a child is bringing an experience that is beyond the classroom, beyond just the normal way of how an Indian lives। खुद इनोवेट किया है, खुद जगह सोर्स किया है, खुद कुछ खोजा है, खुद कुछ किया है। दीज आर वेरी एडिशनल वैल्यू पॉइंट्स दैट दे कंसिडर टू बी wanting inside their campus, because they want other students also to learn from people who have just done beyond किताबी पढ़ाई की है, 12th में नंबर अच्छे लेके आए, ग्रेजुएशन में नंबर अच्छे लेके आए, बट अदर देन दैट कुछ किया नहीं है। Got it. So primarily कोई एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहे हैं, दे आर मोर फ्रॉम आप अ पढ़ नहीं सकते हो इसके एग्जाम के लिए। आई एम टेलिंग यू, एमयू बैट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। देयर इज नो हार्ड लाइन कि यहाँ से पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गॉट इट, यू गॉट कांट इट, प्रिपेयर फॉर इट, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू डू इन द मोमेंट। गॉट इट। सो इफेक्टिवली प्रोसेस ऐसा होता है कि आप फॉर्म फिल करते हो, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, यू गेट अ शॉर्ट लिस्ट Then, बेसिस। then you get a shortlist, and you actually don't get a shortlist, and you have to give the MU BAT exam. ओके, Like आफ्टर if द they शॉर्ट लिस्ट यू consider, गिव द एग्जाम। actually sir पिछले साल तो ये था कि एग्जाम था, उसके बाद मेरे को शॉर्टलिस्ट आया था। अब ओके, आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू दिस ईयर। ये होगा तो आई डेफिनेटली लेट यू नो, यू कैन डेफिनेटली पास ऑन द मैसेज टू योर स्टूडेंट। मैं पूछ एब्सोल्युटली, लूंगा एक बार कॉलेज में। गॉट इट, बट हाँ, लाइक देन यू हैव टू फर्स्ट, यू देन यू गिव द एमयू बैट एग्जाम, देन यू गेट अ क्लियरेंस कि हाँ आपका हो गया, देन यू हैव एन इंटरव्यू। ओके, गॉट इट। सो And interview is इफेक्टिवली, also, interview panel is also a mix. It could be a student from this current cohort. It could be a student from the previous cohort. It could be somebody who's a faculty inside the college. It could be somebody who's an industry leader. He's a CXO and he comes and takes your interview. कुछ भी हो सकता है. But they do notify you in advance. You can look up the other person's profile. That much they do give you. गॉट इट, गॉट आपको पता है कि आप आपको इंटरव्यू कर कौन रहा है. क्लियर, क्लियर, क्लियर। सो इफेक्टिवली लेट्स से अगर मैं फ्रेशर हूं तो मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब दैट इज समथिंग व्हिच आई देखो मतलब अगर सिर्फ कॉलेज गए हो, पढ़ाई की है, नंबर लाए हो, तो आई डोंट थिंक करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट वांटिंग किड्स who've not done anything beyond that. मतलब मुझे अब इतना पता नहीं है, बिकॉज यार मैं तो जब आया था तो मेरा 5 साल एक्सपीरियंस हो चुका था। बट द काइंड ऑफ फ्रेशर्स आई हैव इन माय कॉलेज, उन्होंने पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ किया है, चीजें खुद खुद खोज खोज के की हैं, तो लाइक एडिशनल सीवी पॉइंटर्स अपने लिए बनाए हैं कॉलेज में घुसने से पहले। So that गॉट actually reflects a lot of initiative, lot of thinking beyond just the normal course of living, which is what they want to add to the campus. Got it. So primarily more from a rounded profile is what is Yes, required. yes, an Uh, all-rounder profile is what they are looking for. got it. Got it. Perfect. And okay, so that part is clear. So I think so, guys. If you have any questions, you can put that in the chat box. Yash, I think more or less we are clear in terms of what are the placements like. What are the costs involved, and effectively a sense of what is the cohort like. Who are the people who are studying at Masters Union, and also I know your profile and your placement, so I can be rest assured that it's a decent place, because that is how I will know, right? You are like family to me, and I think knowing that you are in a good place, it feels gives me a lot of pleasure and pride. um, यश, आई थिंक दो तीन एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास अभी चैट Absolutely, में sir, है। absolutely. सो वन थिंग विच इज देयर इज कि फॉर एग्जांपल कट ऑफ्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे न्यू बैट, द एग्जाम दैट इज देयर, ओके, you fill the form, then you have the exam, what are the cut offs like, how does one, so Sir, preparation exactly, will be हार्ड लाइन कट ऑफ तो नहीं होता है, राइट? लाइक ऐसा नहीं है कि स्कोर 80% तो तुम्हारा नहीं होगा। बट द थिंग इज एग्जाम इज ओनली वन फैसेट ऑफ इट। द थिंग इज कि ऐसा नहीं होता है कि इफ यू स्कोर्ड 85 परसेंटाइल इन एमयू बैट दैट गेट्स यू रिजेक्टेड, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक the thing is, your application is not just your details and your work experience and your academics. Your entire candidature is based on your exam, your academic background, your co-curricular background, your extracurricular background, the kind of questions they ask, the way you've tackled it, that, and then the interview. उसके बेसिस पे आपका पूरा सिलेक्शन होता है। सो इट्स जस्ट, इट्स लाइक अ बिग थिंग, एंड इट्स नॉट तीन चार अलग अलग चीजें हैं कि आप कट ऑफ क्लियर करोगे तभी आपको नेक्स्ट राउंड में घुसने को मिलेगा। इट्स नॉट, दे डोंट फॉलो द कन्वेंशनैलिटीज ऑफ हाउ थिंग्स आर अदरवाइज। got it. So Yash, if I look at your profile, but I know your profile, but for the viewers, the people who are watching it, what is it that you believe? Do you believe that your experience, and if you can talk a little bit about your experience, which you believe was the major reason behind you getting shortlisted into the MU program? So if you could talk a little bit about your profile, which you believe. Absolutely, absolutely, Yeah, sir. yeah, Absolutely. So, I'll break it down into like multiple factors here. I was not very good academically speaking क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे 10 12 ग्रेड के मार्क्स इससे फेयरली एवरेज हैं, राइट? खराब नहीं है, एवरेज है।
बट देन अदर देन दैट मैंने इसके अलावा और बहुत कुछ किया. लाइक आई यूज्ड टू प्ले फॉर इंडिया अंडर 19. आई इवन गॉट अ ऑफर टू प्ले फॉर अ club in Germany, right? So I was a professional footballer that way, and I aspired to be there. However, it did just not work out. So then I moved to academics because life to lead करनी है, एक respectable life होनी चाहिए. So that was my Right. thinking. I mean, after graduation, then I went to do a job at Goldman Sachs. I was there for like what 6, 7, 8. I think close to a year I was there, right? I worked on the Flipkart Walmart transaction that happened. So that was a very key pointer. It's a big thing to be part of a team when you are a fresher right out of college and you get to work on a big M&A like that. India में Flipkart का take over हो रहा है, Walmart take over हो रहा है. If you guys were aware at that time कितना buzz हो रखा था कि Got it. Walmart India enter कर रहा है. I mean, it's a very strategic acquisition to make. ये Correct. सब चीजों के बाद बहुत सारी और चीजें होती हैं जो इंडस्ट्री में मार्केट में which starts to reflect in the years to come. तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपने काम किया and खत्म हो. यू गेट टू लर्न अ लॉट मोर. सो दे सी दैट ओ इसने यहाँ काम किया फॉर दैट मैटर, एक ही साल काम किया बट किया, एंड दिस इज व्हाट he would have done, he has done, this is what he could have like potentially learned out of that. Then I moved to my family business after that. तो मैं अपना घर का काम देख रहा था. I also started a startup called Just Caffeinated with a co-founder with me. So yeah, that as well. And then उसके बाद मतलब मैंने अपना CFA complete कर लिया. I'm a CFA charter holder. I've like rigorously studied through all of it. तीनों लेवल क्रैक किए हैं. FRM का लेवल 1 दे दिया, वो भी क्लियर हो गया. लेवल 2 मेरा भी बाकी है. Already given the exam, awaiting the results right now. Got So yeah, this all things like that. Then they did see my answers to. I mean, मुझे नहीं पता इस साल के एप्लीकेशन में क्या क्वेश्चंस होंगे, बट मुझे जो दिए थे क्वेश्चंस, I literally I spent what 4, 5 days on my application before I submitted it. बार बार आंसर बनाना, चेंज करना. How could I make it more inclusive? How could I make like put a more convincing point to them? And it has to be all true because वो इंटरव्यू में फिर पूछ लेते हैं. it. Got it. Got it. Perfect. Yash, I think this sounds really, really amazing. If there are any other queries, I am, absolutely in touch with you all the time. I'll ask you and I'll relay it to Absolutely, sir. Absolutely all happy the way. happy to share with everyone. It was very, very lovely having you here, Yash.